Okay, so welcome people. We are here to discuss a big problem about managing passwords. In any organizations and in personal things, when you go digital, every one of us has some data which is personal to us and we do not want it to be divulged to unauthorized people because data in wrong hands or information in wrong hands can wreak havoc. Okay, so I just tried to do a little bit of research and then try to figure out what are the biggest concerns to a person who has got some safe information, some information that is supposed to be safe and secure. Now, we'll basically do a little bit of polling while we are discussing it. I'll just take a raise of hands that how many of us are actually facing this kind of an issue. Okay, do you have any personal data or professional data which you want to be as secured with the help of a password? It can be email accounts, it can be credit card or debit card information, it can be net banking accounts, it can be tax return accounts, excise, anything else. Okay, I think all of us have some kind of a data issue. Okay, now the issue is that it has to be password protected. You just cannot leave it in open. Okay, but when you protect it with passwords, there are several issues that start getting attached with it. Okay, now when you have this thing, like in Rahul's class, we know that we have to hand over the account to our EA, and simultaneously we have to hand over the accounting system to our accounting people. Then we have to go online. Government has done these kinds of clauses that it is mandatory that you file your returns online. Okay, so all these things are very, very sensitive to a business, sensitive nature to a business. So you have to have it very close to your chest and vault. Now, the moment you hand over your passwords to your employees, it becomes at their mercy and their integrity and depending on their technical IQ. Okay, do you feel scared about the fact that this data can be going into wrong hands, it can get stolen, or your passwords can be? Now, how would you feel if there is a system that can eliminate this problem? That I can share the password with my employee, but he still doesn't know what the password is and he can continue to use that. Will that be a good thing for you guys? Okay, and sometimes it also happens that since we are not very happy or comfortable sharing our password and information to our guys, we generally keep those tasks to ourselves only. Okay, and result of this is that we end up doing those tasks which can easily be delegated. Now, if you have a system where you can hand over the password on a platter, but still he doesn't know or she doesn't know what the password is, all those tasks related to that particular functionality can also be delegated. It is going to basically spare you more hours to focus on other business growth activities. Okay, do you agree? Okay. How many of us use our date of birth, spouse name, car registration number, residence, office address, anniversary date, pet name, or anything else as our passwords? Great, you are an involved personality now. Okay. Now, because we want it to be easy to manage and remember, okay, so that is why we use this practice. And this is one of the worst practices, and this is also most prone to hacking and cracking. Because if I have your Facebook account, I know what your name is, I know what your spouse name is, I know what your children's are, I know what sometimes your residence, your school, your middle name, XYZ kind of information. That will give me the basic information that I can start processing in order to find a password. Okay, and how many of us have faced this problem or issue? Okay, generally we keep password as 0123456789. Okay, Manoj 123. Okay, Minakshi 347, or my anniversary date or my birth date or something similar. Okay, how many times do we actually spend a minute to have a password similar to this? Then where do you save it after that? Great. So you are actually inviting one more vulnerability in your system. Yes. Okay. Hmm. How many songs do you know? Okay, and how many passwords do you have? Exactly, exactly. And sometimes in case of banking and similar kind of passwords,
in your third wrong attempt your account would be locked. Okay, and आपको जो है गाना अगर गलत याद आ गया तो imagine क्या हो सकता है. Okay, then is another major obstacle. Okay, remembering those passwords. Okay, how do you remember? This I have already discussed. Okay, when the password is unique and complex, it becomes very difficult to remember. Okay, he's just quoted one example I have discussed with while talking to other people in the group. I saw many people using a specific notebook or a diary which they keep in a locked system, and sometimes somebody suggested that I have an email which is saved in a draft where I save all the passwords because I am online and this draft email would have all my passwords. How many of us are using Excel file or diary or notebook or email? ऐसा करना आप चालू करें. Okay. Okay. All of us are good otherwise? Great. I'm just coming to that. I think forget password is your best friend in that case. Okay. Now you are using Internet Explorer, you are using Chrome, you are using Firefox, you are using Opera, you are using desktop, you are using laptop, you are using Windows systems, you are using Mac, you are using mobile systems, you are using Android, you are using iOS, and all of us have a mix of combinations of these devices. The problem is that if I am using my passwords, an Excel file is stored here, okay, I cannot use it at their system. Second thing is, if I have multiple instances of Excel file here, here and here, it becomes a pain in the head and the neck and you know where, okay, because the Excel file is not getting updated simultaneously. आपने कोई पासवर्ड चेंज करा, बाकी पासवर्ड फाइल में चेंज नहीं हुआ. Okay, so if you are on a second system or a third system, you are not going to have access to your latest password. That's a big problem. I tried this at some point of time so that कि मैं अपने colleagues के साथ share कर सकूं, but it didn't work. Okay, अगर उन्होंने change कर दिया, it didn't work for me. मैंने change कर दिया, it didn't work for them, and it's collapsed. Okay, now has it happened with any of us that the account or sensitive information got stolen or hacked or phished or cracked? Ever happened? What happened? Mm-hmm. Yes. Yes. One of my clients, he happens to be a doctor. A couple of years back, he had gone to USA, and then there was an email which I received in my inbox that I've lost my baggage, I've lost my wallet, I've lost this, I've lost that. Now this is my account number. Please deposit $50 in my account. And this guy is a millionaire. He's not going to write me an email telling me that deposit $50 in my account. So I immediately knew, because of my past experience, okay, that it is basically an attack. And the best part was that it was generated from his email account. Okay, जो signature वगैरह था, ये बाकी सब चीज़ था, वो बिल्कुल appropriate था. Otherwise, there are ways in which you can figure out that this is not the email generated from his account. If Deepak is writing me an email, every time there is a thing written over there, Deepak Methi, Pankaj Electronics, mobile number, I know. And all of a sudden, one email comes with this kind of an information, and that part is missing. I would immediately know that this is not an authenticated email. Okay, so I knew somehow that it is not. I immediately called that person in USA. मैंने कहा डॉक्टर what happened? कहते yours is the 12th call asking me what has happened, and I think my email account has gotten compromised. Okay, so that's how it happened. Okay, and that was very embarrassing, and that guy never got hold of his email account back, and he lost his email account permanently. Yes. आपने पासवर्ड चेंज कर दिया है, ठीक है. फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपको जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर वो पासवर्ड चाहिए वो आपने डाली नहीं है. दिस इज योर ओनली ईमेल एड्रेस. You can't get access to anywhere to this password. Anurag. Okay. Now, I think all of us would have been aware of this forgot password thing. Okay. Most of us would have used it and abused it extensively. Okay. Now, this is obviously an outcome of the previous problems. Now,
as I've already explained this problem that we use multiple browsers, multiple platforms, multiple systems, multiple devices. Now this becomes a problem. And sometimes people tell me that, I think one of us was telling me that I'm like saving it in my Chrome account or I'm saving it in my Firefox. How many of us are actually using Chrome password management, Firefox password management or something? Okay, do we know that there is a system over there? Okay, have you ever seen that whenever you go and put in your username and password, Chrome or Internet Explorer or Firefox pops you up with a message that we want to save this password? Okay, now there is a built-in password management system into that browser, but it is not safe. Let me show you how safe it is. Do you want me to show you how to crack your password? Okay, but don't do that with me. Okay, if you are logged into Chrome, you do not need any password skills, you do not need any hacking skills, you do not need any speaking or cracking skills. It is just available right in front of you. All that you need is that a system which is open. Okay, just go there and not even email. You just need to have your system open if you want to get into that. Yes, anybody's system. आप लोग जो है कभी अपने स्क्रीन गार्ड अपने स्क्रीन सेवर्स वगैरह लगाए हैं, सिक्योर स्क्रीन सेवर्स कभी लगाए हैं आप लोगों ने? मेरे ख्याल से नहीं. So that means कि if anybody knows where to look, it's just there. All that you need is that you have to know where to look for it. Okay. Go to advanced settings. Yes. Yes. Do you really want to know? Okay. Here are the passwords. Safari I haven't used. It's not. I'm not very sure, but I think there is a vulnerability attached with that because no browser comes with secure password management system. All you have to click here is show, and it's there. Now it can be anything. These are my some passwords. These are my local domain management password in my LAN. Why am I telling you all this? Okay, these are my online forums thing. These are my this thing. Okay, if you are into Chrome, go to settings, then advanced settings, then look for password management. Yes, yes. But Chrome खोलने के लिए कोई पासवर्ड नहीं चाहिए किसी को. Please understand that. Okay. PC खोलने के लिए अगर आपने खुला हुआ छोड़ दिया और आप लंच के ऊपर चले गए, नहीं वो आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है. If somebody starts to target you, you are highly vulnerable. Let me assure you that. है ना सोल्यूशन, मैं बताऊंगा ना अभी आपको. नहीं उसका भी तरीका है. Okay, now if you are into Firefox, okay, here is how you can get into Firefox. Security tab. These are all my usernames and passwords, and so are yours. All you have to do is show password. Click on show password, and cut, show you all the passwords. ये did you find these, or were you already aware of this? आपके में भी है iPad में? I'm sure it is. हाँ होएगा. Now, if you are saving your passwords in Chrome, and all of a sudden you start to use Firefox, the passwords are not available from Chrome to Firefox. Okay, there is only one option, that you have to install a fresh version, and it asks you, do you want to pull all the passwords and all the profiles and all the settings and all the bookmarks from your existing browser?
You can say yes or no to it, but that's the only option. Otherwise, it's all available right in front of you. No, 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 no. Okay. Now let's say if I'm here working on this system and my battery conks off and there is no way I can charge it, and I have to give something very important to you. Okay, I can come down to your system and start using my password stored in somewhere very, very safe, and I can start using that. Okay, so this is the beauty of the system which I'm just going to show you. Okay. Now, what if there is a solution available that can eliminate all these problems? Okay, that will save us a lot of headache, pain, and remorse. Okay. Now, if there is a system that is cross-platform compatible, these are the three major platforms. Okay, Windows, Mac, and Linux. Then all the major browsers have been covered, whether it is IE, whether it is Firefox, Safari, Chrome, or Opera, or HP WebOS, or iPhone, or Symbian. Symbian is basically Nokia. Okay, all these things. So if you start from here, it is available everywhere. If you start from here, it is available everywhere. Okay, it's a fantastic solution that I'm just going to show you. The solution is the LastPass, the last password you will ever have to remember. The solution is that all the passwords, whatever you create, are going to be stored in one location. Okay, and you will have to remember, you will have to create a master password, and this master password is the only password required ever to be able to manage all your secure passwords. Okay, I'm just going to show you a live demo for that. Now, I'm going to cover all these aspects. How do you install it? How do you figure out which edition is for you? How do you switch browsers and still continue to use it? How do you create profiles? I'm going to just give you a demonstration of all these features and functionalities. If you have any questions, you can always ask me. Okay, then I have divided my demonstration in two parts. One is basic and the other is advanced. Okay, somebody asked that what if somebody holds a gun to your head? Okay, there is still a workaround for that. Okay, I'll just tell you how. That will be covered into advanced section. You have to go to this site called lastpass.com, and the beauty is, it is, yes, I can see light in lot many eyes. Okay, now if you are into mobile systems extensively, then you will have to pay $1 per month. Okay, if you are not into mobiles, okay, if you are into desktops and laptops confined to that particular segment only, then it is completely free. Okay. Now you have to download the LastPass. The right edition would be selected automatically when you go to the when you go to this website. Okay, you can click on this download LastPass and then download the tool for your specific system, whether it is Mac or Linux or whatever. Yes, yes, yes. This is system specific, but all the tools, whether they are on Linux or Mac or Windows, they talk to each other. That's the beauty of the system. Okay, any password that you create in this system, you can log in into any other system. It will be available to you on that system also, or any device for that matter, or any platform for that matter. Yes. Yes. Fantastic question. I was expecting this. Glad you asked. Okay. Now the point is that what if this becomes our vulnerability scenario? What if this becomes our weak point or bottleneck? Now there is something called SHA. How many of us have heard about SHAs? Secure hashing algorithms. No. Okay, this is an algorithm, this is a computer generated system which always creates one way blobs. Okay, something like कि आपने एक आलू लिया, उसको ग्राइंडर में डाल दिया, उसको अच्छे तरीके से ग्राइंडर चला दिया, एट द एंड ऑफ द डे वो आलू जो है एक समथिंग एक मैश बन गया उसका. Okay, now there is no way you can put this mash back and get this आलू. There is only one way system. Okay, जिसके पास ये मैश है उसको नहीं मालूम आलू कैसा दिखता था, कैसा था, क्या शेप थी, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स थे, क्या थे, बट उसके पास सिर्फ मैश है. Now, as a similar analogy system, okay, they only get something like a blur, which is meaningless. Yes, which is absolutely meaningless for them. Now, anything that you do is, any processing that you do is done on your local system.
while you are generating your password and storing them. Now, your password, your username combined together, put into an algorithmic system and what do you call that, process together, would be able to generate a 256-bit blur, which will mean nothing, and there is no way in which you can reverse engineer that back to your username and password. Yes. Now, the only weak point for this particular system is that if you forget your master password, yes, you go back to your company and tell them that I've lost my password, please help me. They will tell you that that was the entire purpose. Why are you coming back to us? If we had access to your password, then there is no point of our serving you. Okay? They do not have access to your passwords. Yes. If your master password is weak, then this becomes your bottleneck and vulnerability point. Okay? So you have to be very, very intelligent in doing your master password. Now, उसके अंदर आपको गाने याद रखने हैं, आपको चुटकुले याद रखनी है, स्पाउसेस के नाम याद रखनी है, कॉम्बिनेशंस करने हैं, एक्स करना है, वाई करना है, एस करना है, आप जो करना चाहो वो करो, but it has to be powerful enough and it has to be memorable to you. Yes, yes, yes. They have come out with a workaround for this because they started facing this issue because it is not very abnormal that one may forget their master password. They have a workaround to that. I cover that, try to cover that in advanced section. Okay. Now, if you would like me to go through this entire process, you can just start doing it on your own. I may not be able to exactly replicate because it is already installed on my system. You will have to have internet access. Yes. Yes. मेरा ना मैंने केबल के साथ कनेक्ट करा हुआ है. Although I wrote, but it is not possible for me to create a hotspot here. Anybody who can create a hotspot here? Yeah, please create a hotspot. Great. Now, if you are actually doing it, I can wait for a minute or two. Yes. हाँ, ये download last pass पे you will have to click and download your relevant version for your system, current system. Yes. Now, another thing that you can see is that this bar is green. There are two kinds of security validation systems, green and blue. Yes. Manage your process. इसमें तो ये नहीं आया कि but it doesn't have a show password option. Your system is not unique. Your problems are not unique. नहीं, जो आपने सेव ही नहीं करा तो इसमें सिस्टम में नहीं है. आप हाँ कोई बात नहीं. .com. Now, if you have like more than 50 or 100 employees, then what is required in your case is probably an enterprise solution for that. Again, there is a per user edition available. You can go and check into enterprise solution, or you can tell your administration guys in your office to check this particular option if you are interested in that. That's the paid one. $24 per month per user. Sorry, $24 per year per user. Per user, yeah, $2 per month.
दैट विल बी व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट, व्हाट ही इज सेइंग इज आल्सो करेक्ट। अगर आपने एक जगह पे सारी सिक्योरिटी बिल्ड करनी है और आपको उसके बाद शेयरिंग करनी है, शेयरिंग तो आप नॉन एंटरप्राइज यूजर्स के ऊपर कर सकते हो। बट अगर आपके पास बहुत सारे डिवाइसेज हैं, जैसे राहुल सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग लैपटॉप टेक एन आईपैड, okay, then sales team has an iPad, then in that case you will have to connect devices with your central system, then that is going to require a paid version, because devices के ऊपर जो है free version जो है नहीं चलेगा। Although there is a 14-day trial pack available, you can try and test it out whether it works for you or not, and then you can get into a paid version. So are we through? Shall I move ahead? Okay. हाँ, एक्चुअली वो फाइल साइज जो है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करेगा। Okay, anyone who has installed it already? Yes. Create your account के ऊपर जो आपसे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा, नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। नाउ दिस इज योर मास्टर पासवर्ड। अननोन फाइल, ये सेकंड टाइम हुई है अननोन फाइल, वही डाउनलोड करवाने पे दिस इज द व्हाट आई डाउनलोडेड लास्ट पास में सफारी में बाय I am really helpless in case of Mac. I have very limited skills on this. यूज करते हैं, मुझे नहीं आता, यूजर पूछते हैं, मुझे नहीं आता, बड़ी लोग शॉप में गाड़ी करवा लेते हैं, नहीं आता। आप कौन सा प्रोजेक्ट सफारी यूज कर रहे हैं? तो वही करा ना। जैसे कार देखती अब वो आपकी एग्जीक्यूटेबल नहीं है फाइल, एसटीपी फाइल है, कैसे उसको यूज करेंगे? ऐसा तो नहीं। यस, ये लास्ट पास की जो भी अभी तक भी क्लियर बाद में चेंज करते हैं ना। हाँ हाँ, ये आप चेंज कर सकते हो। It will tell you that these many of your passwords are insecure. These many number of your password or this many percentage of your entire safety information is insecure. Depends on how deeply involved you are into brute forcing and your। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप ब्रूट फोर्सिंग के अंदर कितने खुद डीपली इन्वॉल्व हो और दूसरा आपकी कंप्यूटर कितना पावरफुल है। अब डैन ब्राउन किसी ने पढ़ा है? डैन ब्राउन पढ़ा है आपने? पढ़ा है आपने? उसके अंदर इफ आई बिलीव करेक्टली या तो
एंजल्स एंड डिमॉन्स के अंदर या उसके किसी एक सीरीज के अंदर था, दैट वाज ऑल अबाउट सिक्योरिटी सिस्टम्स. And USA, FBI, CIA, and all these organizations have got a strength or a chain or a group of supercomputers which are dedicated just for password cracking only. If they see something like, what do you call that, suspicious activity going on, they will try to look into what is happening in your email account, something similar. So that novel is beautiful. If you want to get more into hashing algorithms and security systems, go read that novel. That's a good workaround. हाँ जी, यहीं ले आइए, ये वहां जाए. यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ले आइए. 12 समय, अच्छा 5:30 बजे. मेरे को लगा कितने सज्जन है. नहीं, अभी जो है ना आपके सिस्टम को उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू इंपोर्ट ऑल द पासवर्ड फ्रॉम योर इंटरनेट एक्सप्लोरर. पहले उसने देखो आइटम्स कितनी फाइंड करी है उसने. डज इट से आई कुड नॉट फाइंड एनी आइटम्स. ओके, सो इसके अंदर बाद में इंपोर्ट फंक्शनैलिटी आएगी जिसके अंदर यू विल बी एबल टू पुल इन योर इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम एंड ऑल अदर पीसेस ऑफ डेटा फ्रॉम ऑल द प्लेसेस. Okay, let's just move ahead. Okay, once you have installed it, it will be installing you for Internet Explorer, Firefox, and Chrome, and Opera, and all these basic browsers. Okay, when it is installed correctly, you will see something similar to this over here. Okay, can anybody see this particular icon on their browser? You're seeing that? Okay. Okay, either it would be red. Okay, either it will be red or it will be dark gray. Okay, dark gray means that you are not logged in into the system. Okay. कोई क्वेश्चंस वगैरह टाइप का होगा ना कि इफ यू आर फॉरगेटिंग दैट पासवर्ड यू हैव टू बेसिकली पुट ए क्लू टू योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ. Okay, now it's showing me duplicate password alert. Some place there is a duplicacy. You can't keep two passwords in the same. You can. It is just an alert. It is advised that you must never. I know. 17 passwords same. धीरे बोलो. Don't be so relaxed and tell me I've got 17 same password. That's the problem. Yes, and most of them probably would be within your system. हाँ, कि अगर आप कभी इस ईमेल आईडी को लूज कर दो तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए. इट वुड बी एबल टू सेंड यू समथिंग. Okay, now let me just show you a demonstration of this. Now, if I have to go to any site, for example, Facebook. Okay, just see the magic.
see 2 stars, it basically shows that it has been populated automatically by LastPass. I'm coming to that. Just save your questions till the end. आपको सिर्फ उस एक्सेस उस पेज तक या उस साइट तक जाना है. It will automatically sense which site and which page you are on and take the right username and password and populate it over here. Now, coming to that. ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट का पासवर्ड है. ये मेरा फेसबुक के लॉगिन करने का पासवर्ड है. ये yes, beauty. Autosave is basically for form filling. Passwords are special type of forms. Username and password are special type of forms. Autofill is different, autosave is different. अब Chrome के अंदर भी ये चीज है, मगर since it has got vulnerability, that is why we tell you not to use Chrome password management system. That is the biggest vulnerability, not the only vulnerability. Neither can Chrome see it. Okay. SHAs आपने सुना था? You were there when I was discussing with SHAs. Yes. So, in this case, Chrome knows what your password is. In this case, LastPass doesn't know what your password is. It is basically reverse. जो username password मैंने इसमें दिया हुआ है, उसके basis के ऊपर ये hash keys algorithms लगा के जो है ये generate करके उसको यहाँ पर calculate करके यहाँ पे बता रहा है. What it is doing right now is basically it is sensing that I am on this page. Now, according to it, this is my most favored password because it is the same machine from where my wife also accesses her Facebook account. Now, how would it know that it has to be logged in from here? Okay. Now, I have configured it like this. Now, there are 3 login systems. 2 are mine for 2 different purposes, and 1 is my wife's account. Okay. All I have to do is click this, and with one single click, it will log me into the system without me having to touch any keyboard stuff. Yes, वो अपना वो select करेगी और वो हो जाएगा. Okay. That is not what I want. I want her to log into my account. नहीं, it is easy. Then आपका जो है इसका मतलब profiles configure आपको करने पड़ेंगे. You'll have to set up your windows in 2 different profiles. जब आप login करोगे आपको 2 अलग-अलग आपको accounts नजर आएंगे. My account, my wife's account, or whatever. उसका password तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा. Okay. Now this is a very simple demonstration of using a password. Now what about filling up forms, as you asked? Now this is a form which I have to fill, and most of the sites want me to fill at least 3 to 5 fields. Okay, now if I go on every time, this is one of the biggest obstacles and roadblocks. Okay, I just go there, go to LastPass. There is an option called fill form. Okay, you have to just select which of the profiles I want. You can create a new profile. You can create your new credit card, debit card information system. You can clear the form, or you can choose which profile do you want. Okay. Now currently I am going to say that fill it with. Okay. Now it tells me all the information has been populated automatically. Now comes this. Now see, even the date of birth has been automatically populated. वो मैं बताऊंगा ना. Okay. Now comes this dreaded particular thing, that how do I create this new password? Okay. Can you see this? Okay. Now there is a password creation algorithm, secure algorithm built into the system. You have to define the length of the password, like how many characters password do you want. Then you have to tell it what should it be consisting of, uppercase letters, lowercase letters, numbers, or special characters. Okay. Minimum digit count, how many digits do you want in that?
out of these. Okay, avoid ambiguous characters. Okay, all these things can be built into this, but this is only a one-time thingy. Okay, you don't have to do it all the time. All you have to do is generate. Whichever password you like the most, you can just do what I'm going to do right now. You don't have to copy also. Okay, now let's say I say 12-digit password. Okay, now the security check bar fills to its maximum. Okay, nowadays, earlier it was 8-digit passwords or 8-character passwords. Now this thing has shifted to 10 digits. Okay, now 8-digit password or 8-letter password is no longer considered as safe because there are huge volumes of processing power available to be able to reverse engineer that. Okay, all I have to say is accept. The password gets populated automatically. You don't have to touch, copy or paste or whatever. I don't know. We don't know the password. I don't know the password. I just generated right in front of you. अभी यहाँ तक तो हम फिर भी कुछ करते थे. इसके बाद हम क्या करते थे, पासवर्ड को उठाते थे, एक्सेल फाइल में कॉपी पेस्ट कर देते थे और उसके आगे लिखते थे कि मेरे कौन सी साइट का पासवर्ड है ये. राइट? ओके, अब मेरे को एक्चुअली नहीं मालूम कि मैंने क्या पासवर्ड रखा है. Yes, it takes you like 1 or 2 trials to become used to it, this kind of real power. Guys, please, 1 minute, sorry. Right now? हाँ. Now there are 2 systems. If there are more than 1 password associated with this particular page, you will be able to select which password you want to enter. Now in my case, there are sometimes hundreds of passwords for, let's say, Gmail account, because I am working with many clients. Okay, मेरे अपने passwords को तो मैं छोड़ ही देता हूँ. There are hundreds of Gmail passwords which I have to manage. I'll go bonkers if I start managing them in the Excel file. Actually, बता रहा हूँ अभी. I'll just come to that step in a moment. Give me a couple of minutes, the question would be answered automatically. आपको कहीं पर भी जाना है, LastPass is your friend. Now you will say कि मेरा master password मैं साइबर कैफे में जाके खोलूंगा. That's a pretty hostile environment. You don't know कि keyloggers install हुए हो, virus लगाओ, spyware लगाओ. That's a big issue. Yes, that's a big issue. Now a solution for that, which I'm going to cover in advanced demonstration, is one-time passwords. Once you log into a system, it is consumed and the password is not going to be utilized again. Okay, so if you know that you are going to use this kind of a system into a hostile environment, or if somebody is holding a gun to your head, or there is a very close friend of yours, you want him to have access to your main secure vault, but this is some kind of a majburi for some cases, specific cases. Yes. Okay, this one-time password is going to be a friend. आपने 10 पासवर्ड जनरेट करके अपने वॉलेट के अंदर रखे हुए हैं. आपको फोन आया कि सर मेरे को पासवर्ड चाहिए, या कोई बंदा आया है बंदूक लेकर के पासवर्ड चाहिए. लो सर पासवर्ड लो. आपने पासवर्ड उसको रीड करके दे दिया, उसने यूज कर लिया, खुश हो गया, यार अंकुर का सारा पासवर्ड आ गया, लॉग आउट हुआ, फिनिश्ड. ओके, सेकेंड थिंग इज पासवर्ड की लिस्ट आपसे किसी ने छीन ली, प्रोवाइडिंग ही ऑल्सो यूज लास्ट पास. ही ऑल्सो न्यू कि लास्ट पास का इतना यूजफुलनेस है. आप घर आए, आपने वन टाइम पासवर्ड सारे डिसेबल कर दिए. जो आपके अनफिनिश्ड और अनयूज पासवर्ड थे वो सारे डेड हो गए. डज इट आंसर योर क्वेरी? तो आपने 10 पासवर्ड आप जनरेट करके अपने वॉलेट में रख लो, कहीं से भी यूज कर लो. हाँ, यस, हाँ, वो करना पड़ेगा आपको. अनलेस यू हैव एक्सेस टू द टूल.
Okay, now there is another solution for this particular problem, guys. There is another solution. What he is asking is कि अगर मैं साइबर कैफे में जा रहा हूँ तो क्या मेरे को लास्ट पास पहले से इंस्टॉल करना, पहले तो होगा नहीं, ओके, फिर मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर मेरे को लॉगिन करके एक्सेस करना पड़ेगा, फिर वन टाइम पासवर्ड XYZ is going to work. Okay, now they provide another secure workaround for this, that there's something called LastPass Pocket. Okay, this is a mobile edition of this entire system. Okay, you can put that into your CD, DVD or maybe USB drive. उसके लिए आपको $1 per month expense लगेगा आपका. Okay, हैं? Okay, तो there are multiple ways in which you would be able to use that. आप USB key को उसके अंदर डाल सकते हो. There is something called grid-based password systems. Okay, there is a complex matrix that shall be generated. It is again part of the advanced system, which I am going to give you a very small demonstration of. It is going to ask you certain questions. If you have that grid, only then you will be able to answer. If you do not have that grid, nobody in the world can break into your account. Not even LastPass guys themselves. Not Pocket Pass, but grid system and the combination of these things. नहीं, क्रेडिट कार्ड के पीछे ग्रिड नहीं होता. ग्रिड नहीं होता, वो आई थिंक CVN नंबर या CA. What happens the next time you again log into Facebook, that means you will generate another password? नहीं, आपका लॉगिन तो ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ ना उसमें, जैसे ही हम फेसबुक के ऊपर गए थे. ओके, शैल आई मूव अहेड? एनी क्वेश्चंस सो फार? कैसे दिखेगा? हाँ, वन टाइम पासवर्ड यूज करोगे ना तब आप. वन टाइम पासवर्ड अगर दिख भी रहा है तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस. हाँ, okay, then you need to understand how keyloggers work. Okay, you'll have to understand a little bit of that. That is, I don't have an example of that. Probably we can discuss it slightly offline. But rest assured, it is safe. आपका अपना सिस्टम अगर सेफ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सिर्फ एक चीज के बेसिस के ऊपर सारी चीजें नहीं आप छोड़ सकते. मेरे को 1 मिनट और लगेगा, आपको ये सब चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. यस. Now we just know that it generated a password for me. Now it is showing you that generated password for Facebook.com. Okay. Now I have to basically tell him I have not used this password so far. It is not giving me a pop-up. Had I clicked and signed up with Facebook, it would have given me this password. Save this password associated with this site. I do not want to create. If anybody wants to create, or maybe let me just try this with some email creation system. I do not want to create a new Facebook login. So, okay. See, over here also, it automatically populated my most used and most favorite password. Although there are still more login systems over here. Okay, some of them belong to my client. Okay, then there is still another series of passwords which are not my favorite password. Okay, this is all these passwords. At some point of time, I had various clients, so all these passwords still exist in my system. If I want to use these passwords, I can still do that. Okay. Then I have his never. Okay. Now, if I have to create a new account, it will help me populate all the form fields, and then it will save that password associated with this particular site. And it will ask me after I have done that. You can just try this out. कोई आप नया account create करना हो कहीं पर आप कर सकते हो इसको. Just try that out. It will ask you save this new password. Now, when you go there, can you see that? Generated password for Facebook. ये कह रहे कि अभी मैंने एक पासवर्ड जनरेट करा है फेसबुक के लिए. अभी तक मैंने प्रोसेस अपना कंप्लीट नहीं करा है. It is intelligent. Okay, had I completed the password and clicked on the sign up button,
it would have automatically converted like this, facebook.com, and the password would have been associated with that automatically. Okay. Now, if there are multiple facebook.com, even myself, I am myself going to be confused. So what I am going to do while saving that, इसके आगे मैं अपना नाम लिख दूंगा या अपनी वाइफ का नाम लिख दूंगा या अपने क्लाइंट का नाम लिख दूंगा मैं. Is it clear? कि फेसबुक के ऊपर मेरा अकाउंट है, फेसबुक पे मेरी वाइफ का अकाउंट है, फेसबुक के ऊपर विद्या का अकाउंट है, फेसबुक के ऊपर पवित्र पाल का अकाउंट है, और फेसबुक के ऊपर गौरव का अकाउंट है. आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दैट थिंग एंड देन इट विल बी देयर विद इन माई सिस्टम सेफली लॉग्ड. ओके. Next time I come to this Facebook thing, I'm just going to either select the password through this system, or it will tell me कि Facebook के इतने passwords है, कौन सा password use करना है. Okay, with one click, it is going to change the password जो यहाँ पर populate हुआ है. Is it clear? Not very clear. Any questions? Okay. हाँ. ये ऑटोमेटिकली हुआ ना, मैंने अभी आपको दिखाया ना. लेट मी जस्ट क्रिएट एन अकाउंट. Okay. Now you see automatically my username and password is being shown over here, auto login and autofill. I just needed to click that and it will log me into the system. Okay, now I am logged into my Twitter account, although I don't use it very much. Okay, let me just log out from here. नहीं, ये मैंने पहले जो कहीं कहीं भी कर रखे थे, जिस टाइम मैंने ट्विटर लास्ट पास इंस्टॉल कर था, सारे मैंने फेच कर लिए थे सारे अकाउंट से. ऑल इंटरनेट एक्सप्लोरर पासवर्ड और फायरफॉक्स पासवर्ड. यस, लॉगिन के अंदर इंपोर्ट का फीचर है. इट विल शो यू वेयर डू यू वांट टू. यस, अगर आपने सेव करे हैं तो. अगर आपने कहीं पर कुछ सेव नहीं करा हुआ तो आपकी जो एक्सेल फाइल है उसको आप CSV में सेव करो, उसका URL, उसका यूजरनेम पासवर्ड जो है वो वहां से उठा लेगा, तब वो ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट. लेट अस से हु नीड्स अ ट्विटर अकाउंट. आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन. हु शुड आई क्रिएट फॉर? Okay, new to Twitter sign up. Now, ये मेरा past email already यहाँ पर use हुआ है. I will have to create a new email first, and then I will have to be creating this thing. Let me try opening it with my another email, Gmail वाला. Okay. Again, I have to generate this password. Generate secure password. Except now this time it was automatically a new password. Okay. For the first time I had to set it up. Okay. Now I don't have to set it up all the time. कहाँ पर? Now it will show me I have generated 3 passwords for. Okay. Sometimes this is an example of sometimes site do not accept the password automatically, then I can copy and paste it also. I'm just going to do that. Now this is the 4th password I'm generating. I just copied it and I paste it. Okay. Sign up for Twitter. Now you see it is asking me save this site. Okay. Now it has automatically filled up this thing.
ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड इज परफेक्ट. ओके, मेरा नाम यहाँ पर यूजर नेम आ रहा है यहाँ पर इसके अंदर. एंड देन कीप मी साइन जो रेगुलर उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आ रही है इसके अंदर. क्रिएट माई अकाउंट. नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस. See, this is the password which I just took from there. It has taken the URL, it has taken the name of the site, it has taken the username, and it has also taken the password. Now everything is neatly organized. Okay, right information at the right places. Okay. Now if there are multiple accounts, you can basically put it into as a favorite thing. Okay, that this is the favored account. Okay. If you want it to be auto-filled automatically, that you don't even want to click that, even the login button, it will do that for you also. The moment you go to twitter.com, it will automatically use this username and password, auto login, and log you into the site. Okay. Now, if you have more than one auto login things, okay, then it will going to be asking you that which of these auto login things you want. What if somebody has to log on from your computer? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज करेगा, आप लॉग आउट कर दोगे. No, but if it's automatically log in and then log out. लॉग आउट तो बॉस आपको करना ही पड़ेगा ना. I'll come to that. I'll come to that. I'll come to that. हाँ, एडवांस चेक है. Okay, I'll just save it and it's done. मेरा सेशन तो फ्री है. $12 per user per session. Okay. Now you see my account has been created, my password automatically has been generated, and it's a perfect password. Okay, and it is automatically saved into the LastPass account. Now it is currently being used in Chrome. Okay, let us just try this thing out in some other browser. Just imagine I went to my friend's place and I used his system and I had to post something urgently to the Twitter. Okay, again I'll go there, log into my account, and all those passwords would be available automatically. Yes, or Pocket. Okay. Okay. The moment I log into this, it becomes red from gray, dark gray. Why is it not visible? हाँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ. Okay. Now can you see recently use के अंदर आपका Twitter का आ रहा है और मैंने उसमें 4-5 बारी पासवर्ड जनरेट करता हूँ, वो सारे के सारे अटेम्प्ट्स मेरे वहां पर आ रहे हैं. Can you see that? Generated password for Twitter, generated for Twitter, generated for Twitter. Okay, now it is tracking everything. Okay, now if I don't want them, I'll just go and remove them. Okay, now 3 minutes ago, I just opened a new Twitter account and it is saved. Now, to be able to view this, okay, and then history. Now history, it is going to show you which password I have already kept in the past. Now for your banking details, it is going to be very, very handy so that you don't repeat your passwords. I'm just going to remove that. I don't have any intentions to reveal my previous passwords to you guys. Okay, but the fundamental thing is clear to you. Okay, I'm seeing long faces. Any questions? I was trying to create a Google हाँ. LastPass आपने इंस्टॉल कर दिया इसमें? अच्छा. ऐप होगा ना? हाँ. इसके अंदर ना बुक मार्कलेट्स के स्लाइटली इसके अंदर जो है वर्कअराउंड है इसका, मैं आपको वो बता दूंगा. ठीक है. फॉर ऑल मोबाइल डिवाइसेस देयर इज अ वर्कअराउंड. इट वर्क्स लाइक बुक मार्क्स हम लोगों ने यूज करे. It is used as bookmarklet. For every site there is a bookmark generated automatically. आप उसके ऊपर क्लिक करोगे automatically username password fill हो जाएगा उसके अंदर. And if there are more passwords related to that, they will automatically populate. हाँ तो okay. There are two things which we need to remember. हाँ,
हाँ हाँ, जब आपने हटना है लॉग आउट कर दो. अब देयर आर टू वेज कि आपका जो है इसमें, जैसे इसमें आप ऑप्शंस दे सकते हो कि ब्राउजर का सेशन खत्म होते ही ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर जाए, या इतने मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर जाए. ओके, वो लास्ट पास. ओके, वो इसके अंदर प्रोविजंस हैं, आप उसके अंदर रेफरेंसेस या अकाउंट सेटिंग्स में जाके ये चीजें कर सकते हैं. ऐसा है कि दो चीजें हैं इसके अंदर. एक तो दूसरे को पता होना चाहिए कि आप लास्ट पास यूज कर रहे हो, लास्ट पास ऐसे वर्क करता है. एक ये चीज है. दूसरा, ओके ओके ओके, नहीं, फॉर दैट यू हैव टू सी देयर आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू विल हैव टू फॉलो. नो टूल इज परफेक्ट अगर आप उसको इस सेंस में लेते हैं. ओके, नो, देयर इज नो लॉग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, बट देन यू हैव टू फॉलो सम बेस्ट प्रैक्टिसेस कि अगर आप अपना सिस्टम किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं तो एटलीस्ट लॉग आउट कर जाओ आप अपने सिस्टम के अंदर. आई मीन, अगर आप जाके कहीं पे ईमेल खोलते हो, डू यू लीव योर ईमेल ओपन इफ यू लीव दैट सिस्टम? यू डोंट. हाँ, तो इसके अंदर आप सेट कर दो कि 10 मिनट के बाद जो है ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ कर जाएगा वो. आप अकाउंट्स के अंदर जब आप लॉग इन कर लोगे उसके अंदर सेटिंग्स के अंदर आएगा. यू सेट इट अप एज 10 मिनट्स, क्योंकि आपने एक बार सिस्टम ऑन करा, जो अपने अकाउंट में लॉग इन करना है आपने लॉग इन कर लिया, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है इसकी. और इसके अंदर आप ये भी सेट कर सकते हो कि हर बार आपको इन्फॉर्मेशन डालने के लिए मास्टर पास डालना पड़े. बट आई पर्सनली कंसीडर दैट एज ए हेडेक फॉर मी. तो उसके अंदर आपका ये प्रॉब्लम, आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा. यू टेल इट दैट कि कभी भी उसके अंदर पासवर्ड डाल लो, मेरे को मास्टर पासवर्ड डालना ही डालना है उसके अंदर. So then nobody can access your any account, whether auto login or autofill, nothing can be done without you having to use it. Yes, yes. But then आपको शुरू में सुनने में लगता है, but practicality के हिसाब से I think personally I've tried that option. It becomes a little too irritating. Okay? तो मैंने उसके अंदर इस तरीके से करा हुआ. Again, personal preference. Again, personal preference. Second thing is कि अगर आप यहाँ पर सिस्टम यूज कर रहे हो, आप ये सिस्टम उठा के कहीं और चले गए, it will automatically detect that the IP address has changed and it will automatically log you off. हाँ, क्या नहीं आया? नहीं, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है. आपने इसका जीमेल का पासवर्ड सेव कर दिया इसमें? नहीं, अभी तक आपका जो है कुछ भी नहीं होगा, तभी ये आपको करना है स्क्रीन में. अब यहाँ पे ऐड साइड करके उसको कर लो, या सारे पहले आप पासवर्ड इंपोर्ट कर लो, इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली. अब जैसे मुझे यहाँ पासवर्ड बनाना है, अब इसमें यूजर बुकमार्क बनाऊँ, उसमें बनाऊंगा. हाउ आई हैव इंस्टॉल्ड? नहीं, बुक मार्कलेट जो है ना ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे. डिवाइसेस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा. मेरा आईपैड वगैरह iOS के अंदर ना हाथ थोड़ा सा तंग है, मैं आपको बताऊंगा. यू कैन डू दैट ऑटोमेटिकली. जस्ट डू दैट. आपका ठीक चल गया? आपका ठीक चल गया? आपका ठीक चलेगा? नितिन, अमित, पवित, डाउनलोड हो गया नहीं हुआ? ठीक है. आप इसके अंदर मैन्युअली भी एक साइट डाल सकते हो. ऊपर आप gmail.com कर दो, यूजर नेम पासवर्ड डाल दो, आपका वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट. आप जो है ना लास्ट पास के अंदर गए, वॉल्ट में लेफ्ट साइड के ऊपर वहां पे एक्शंस के अंदर है ऐड साइट. उसके अंदर आप मैन्युअली एक यूजर नेम एंटर पासवर्ड कर दो, बट वो दिखाई नहीं रहा ना, कोई पासवर्ड ही नहीं दिखा रहा वो वहां पर.
ओके, सेटिंग्स का आप लोग पूछ रहे थे, सेटिंग्स का somebody was asking. No thanks. वो कह रहा है कि आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है या आपको ऑलरेडी है या यस हाँ, वो एक यूजर उसका लास्ट पास का क्रिएट होएगा. आई एम जस्ट गोइंग टू कवर दिस हाउ डू यू शेयर पासवर्ड विदाउट हिम हैविंग टू नो दैट ही पासवर्ड. नहीं, वन टाइम इज बेसिकली ऑल्टरनेटिव फॉर मास्टर पासवर्ड. यू आर नॉट गोइंग टू हैंड ओवर द मास्टर पासवर्ड. ओके, शैल आई मूव अहेड? आपका हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, अभी देख लेते हैं उसको. या नाउ any USB drive can be used, okay, and then you can make it as your dongle based accessing system. Okay, आपको जो है guys please, okay, आपको जो है किसी को एक्सेस देना है या आपको ऐसा दिखाना है लोगों की कि हमारा सिस्टम बहुत सिक्योर है. Now these are two different things. Okay, I've seen people coming to some my friend's office and वो कहते हैं कि लॉगिन नहीं हो रहा क्योंकि मैं अपना USB लाना भूल गया हूँ. Okay, this is also equivalent to digital signatures. ओके, बट दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग. ओके, तो ना यूएसबी के अंदर आपने पासवर्ड अपना ड्राइव के अंदर सेव कर लिया. अनलेस एंड अनटिल यू हुक दैट इनटू ए यूएसबी पोर्ट, द साइट विल नॉट लॉग इन. ओके, सो दिस इज टू हैव एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी बिल्ट इनटू द सिस्टम. दिस इज वेरी पावरफुल. नाउ यू माइट बी सेइंग दैट इफ व्हाट इफ आई लूज माय यूएसबी ड्राइव, यू कैन क्रिएट मल्टीपल ड्राइव्स. Now this is where you can actually create your profiles and Visa and debit card, master and debit card data. Sorry, master not master, credit card and debit card data. And this is identities. Identity is basically if you are basically having two rows, one is personal and the professional. These can be two different identities. Or if you are going to school, so all your studies related things can be configured into the school identity, and your personal relation, professional things can be created under different identities. Okay. Now there is the question that how do we share passwords without the other person having to know what the password is? Okay, that is the question that has been haunting us for a long point of time. Let us say this is the Twitter account which I just created. Okay, now can you see this icon over there? This icon is basically for sharing your password. Now it asks me, who do I want to send this password to? You have to basically put in the email address of the person. You can have up to 50 of the emails to which you can share. And it asks you whether you want this password to be kept as secret or you want to give this password away to him. Share password, but keep it as a secret. The other is share the password entirely. Yes. उसको वहाँ पे स्टार सारी दिखेगा, but in the background it will be functional. Now to some he doesn't have to do anything, he just have to create his own LastPass ID. ये पासवर्ड उसकी आईडी में शेयर हो गया. The moment he goes on to that site, automatically जैसे ऑटो लॉगिन ऑटो फिल हो रहा है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है. हाँ, that is the purpose. See, आपका अकाउंटेंट है, उसको एक्साइज की या इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है. You do not want him to come back to you again and again. बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू एंश्योर दैट ये साइट जो है यहीं से ही खुलेगी, बाहर कहीं ना खुले. आपके कंप्यूटर जो है जिसमें आपने कॉन्फ़िगर करा है, यू कैन अटैच इट. इसके अंदर जो है आप सिक्योर कंप्यूटर्स भी अटैच कर सकते हो इसके साथ में. हाँ, यस, वो आपका मैनेजमेंट सारा इंटरनल होएगा, आपके यहाँ पर होएगा वो. यस, वो आपको हैंड ओवर करना है. उसके बाद उसके पास क्या पासवर्ड है वो उसको नहीं मालूम. ओके, जिस दिन आपने डिसेबल कर दिया पासवर्ड, उसके पास से एक्सेस खत्म होगी.
Okay. Second thing is you can attach this LastPass thing with one system. कि आपका इस सिस्टम के साथ जो सिक्योरिटी आपने अटैच कर दिया, किसी और सिस्टम से वो LastPass को एक्सेस करेगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा वो पासवर्ड. I tell you what to do about it. Now, in my case, let us say, question. Okay. Now, this is going to take you a little while to get your head around this thing, but once you understand it, it is very, very secure and very, very perfect system. Yes. But sometimes it can be a block. He has to use that company email every day. But इसके जो ये वाला फंडा है इससे केवल वन टाइम शेयरिंग होती है ना. I don't want him to know the company email password, but at the same time I want him to use that email every day. Okay. नहीं, but what is the question? नहीं, आपने एक बार शेयर कर दिया, आपको बार बार शेयर नहीं करना पड़ेगा. वन टाइम पासवर्ड इज एंटायरली डिफरेंट. या This password is not happening. This is अगर आपका जो है इतना ही सिक्योर सिस्टम है, ठीक है, तो आप इसको आप यूएसबी की के साथ कनेक्ट कर सकते हो. जब वो यूएसबी की डालेगा तभी वो उसका LastPass एक्टिवेट होगा, तभी कुछ भी काम होगा. ऑफिस से जाने के बाद वो यूएसबी की उतार के जाएगा, कहीं से उसका एक्सेस नहीं होगा. अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए तो आपने जो है यूएसबी की के साथ जो आपने पासवर्ड अटैच कर दिया, जब वो पासवर्ड डलेगी यहां पर तभी वो LastPass एक्टिवेट होएगा. ठीक है. आप ये कह रहे हो कि मेरे को जो है ये 100% श्योर करना है कि वो कहीं से भी ना खोल सके हमारे ऑफिस के बाहर. ही आस्क्ड मी कि इसने मेरे सिस्टम पासवर्ड लॉग इन कर लिया, अब उसको पासवर्ड नहीं पता मगर वो लॉग इन कर सकता है उसको यूज करके. सो ही कैन डू दैट फ्रॉम एनी अदर सिस्टम ऑल्सो आउट ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ माई ऑफिस. उसने अपने LastPass में लॉग इन करा और उसके अंदर से जो है उसको पासवर्ड तो मिल गया. किसी भी रीजन की वजह से वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो फॉर सम रीजन, ओके, तो आपका यूएसबी की कैन कम हैंडी. नहीं, वो कैन नहीं कर सकता. मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने मेरे साथ करा और फिर मैंने किसी और के साथ शेयर कर दिया. आप करके देखो ना यार. मेरे ख्याल से वी आर डिस्कसिंग लॉट ऑफ हाइपोथेटिकल थिंग्स. आई थिंक लेट्स जस्ट ट्राई डूइंग इट. हाँ, प्लीज. Okay. Welcome back. Yeah. Any questions? No. Okay. Okay. I have already shown you how to download the LastPass edition right for your system. I've also shown you how to create your master password, which most of us have already been able to do that. I've shown you browser switching. I was actually creating an account in Chrome and it was available in Firefox within no time. Okay. Almost instantaneously. Okay. Then I also showed you how you can create profile. But I have shown you where you can create a profile. Do you want me to show you how to create a profile? Sure. Then I have shown you an example of automatic form filling for long forms, auto login and autofill login systems. I have shown you as an example. Okay. I've also shown you how do you generate safe passwords. I've also shown you how do you share passwords which is still hidden, that the other person who you are sharing the password with is not going to be able to know what the password is, actual password is. Okay. Then I have also shown you system device switching. I have told you it is possible, but we can try that out. I can from his system and all my password would be accessible from within his system also as well. So far, any questions? Questions? आपका मैं देख लूंगा एक बारी कैसे होएगा.
Okay. When you make the first password, then it says re-enter password. You have to enter another password in that. No, the same password again, so that you are not doing any mistakes while typing it. This is going to be your master password. So it's saying that if you forget, you type in another password and we will email that to you so that your original password remains secure. It says, I am a forgetful person. What should I do if I forget my password? If you end up forgetting your LastPass master password, contact us and we will email you your password reminder. Your password reminder serves to remind you of what your actual password is while maintaining it in your Yeah, so it is the same password, so that while you are entering your master password, you are not doing any typo errors. Because if you do, finished. Yes, it is finished. Done? Okay. Now, this is where you create your profiles. तो इसका मतलब कि इसके अलावा कोई और पासवर्ड डाला हुआ है आपने जो शायद ये रिकॉग्नाइज नहीं करा इसने अभी तक, क्योंकि ऑटोफिल के अंदर अभी एक ही दिखा रहा है. अगर मल्टीपल होते तो वो ड्रॉप डाउन में दिखा था कि ये पासवर्ड सारे अवेलेबल है, कौन सा यूज करना है. हाँ, एक बार आप डाल दो, लॉग इन कर लो, ये पूछ लेगा आपसे कि क्या ये सेव करूँ. Okay, can you, on the left hand side of it, can you see add profile? Now, this is where you can add your entire profile. Personal information, address, contact number, credit card information, bank account information, custom fields and notes. Here is where you can define Mr., Mrs., Miss, Doctor. I think that is self-explanatory. Do I need to go and do the entire thing? Okay. Okay. And in case of an address, gender you can specify here. Birth date is here. Social security number, since this is a company from USA, so they are asking for that. If you want, you can. I don't think you are ever going to require social security number, so you can just leave that field. Okay. That's right. I was saying that probably you could use your PAN number or something, but they don't use it. You don't have to do it. So you can just leave it blank. Now, this is the company. I'm sorry, you said something? Okay. Okay. Then this is the zip code, etc., everything. Now, this is all the information which you are going to require wherever you want to register yourself or log in into or sign up something. Okay. Name, email address, mobile number, and your address and your zip code. These are the most generic information which everybody requires whenever you are going to create a new account. Okay. So now once you can fill it over here, and then after that, wherever you go, a brief example I've shown you while registering my Twitter account and Facebook account. With 1 or 2 clicks, it will be done. And most websites recognize the format they have to offer. There may be some minor tweaks, like for example, it was not recognizing the gender in case of Facebook. It's again 1 click rather than you have to fill the entire form, it's just 1 click. And in some places like secure sites, specific of the nature of banking, where they would have displayed right clicks, they would have displayed copy pastes. Okay. The password you can see is still available. You can just read it and type it. Okay. Or you can use online virtual keyboard, okay, so that keyloggers would be again disqualifying against that. But leaving those things apart, everything else can be handled to a higher level of automation or probably the highest level of automation. Okay, any questions? Aapka chal gaya wo jo? Great. Then is credit card, okay. Now, credit card is something, it took me a little while to understand that whether this is safe enough to put my credit card information into this system. But then I researched a little deeper into that, and then that was the time when I discovered that they are using these kinds of algorithms, so I started feeling safe. Okay. Now you can start putting in your credit card information, name on card, rest is all self-explanatory. Wherever this kind of information is required, you don't have to pull out your card and then type in. It is available with a couple of clicks. You will be able to fill in that information wherever required and whenever required. Yes. Yes. What is the chance of? Did you SHA? You came little late.
Okay. They have this policy that none of their employees, none of their servers are able to access your username and passwords. Why? Because I gave you an example कि आपने एक आलू लिया, उसको ग्राइंडर में डाल दिया और उसका end result क्या निकलेगा? It will be a mashup. Okay, mashed up thing. Now there is no way you can take this mashup and put it back into the shape of that potato. Okay. See, this is something required. See, you are not the first person who is concerned about his security, your security. And also you are not the first person who is going to be worried that if I create this thing into their system, what is going to happen? They have won many awards. Okay, you can. Yes. Same is true with credit card. आपको लगता है credit card companies जो हैं वो safe हैं? हर महीने या हर 6 महीने में आप information सोचते हो कि so many hundreds of credit card information got stolen. Now banking के अंदर आप ये सारा देख रहे हैं. So the thing is that we are forced to trust on those people, but we are not doing anything at our end. Okay, this is adding one more layer of that. Now there's a difference between you have kept your password secure. What if the site to which you are providing your password is not secure? Is this problem understood? Okay. I may be using SHA 256, which is the highest level of security level of algorithm available. But what if the site to which I am providing the password is SHA 1? So that way it will be easy to decrypt, but at their level, there are guarantees and systems which you can go and check your sites, and if you can hire somebody technically to evaluate it, there are people who are experts in security. For example, there is a person called Steve Gibson. He is world's top 10 renowned security advisors, and he works for FBI and other companies in case of requirement on a project-to-project basis. He has done a complete 45 minutes or maybe 50 minutes review of LastPass, and he says that I have done all the types of experimentations, I have done all the types of tests and put it to hardest possible tests, and they have successfully done that. But he also said other things about their competitors, which he said कि इसमें ये problem है, इसमें ये problem है, इसमें ये problem है. Okay, considering he is not getting paid by LastPass, I mean that is what we can assume, the system according to me is safe. Okay, now if there is any vulnerability that is going to be attacked, very highly probable that it is not going to be because of LastPass shortcoming, it is going to be because of your shortcoming or your system's shortcoming. दूसरा उसका तरीका ये है कि आप उसको कर दो कि 10 मिनट्स के बाद जो है आपने जो एक्टिविटीज जहां पे लॉगिन करना होता है यू डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ ओपनिंग योर सिस्टम, ओके, और फायरिंग योर ब्राउजर. You put it to a system that it has to log off after 10 minutes. Settings के अंदर आप जाके कर सकते हैं ये चीज. Yes, yes. Settings में जाके आप ये देख सकते हैं. Let me just show you where it is. Now, इसके अंदर जो है अभी while Gaurav and I think Anurag or somebody asked me this question that I have to give this to my people, okay, and he has to be able to use it. So you can basically generate a sequence of one-time usage passwords and hand it over to your person. हफ्ता 10 दिन 20 दिन उसने यूज कर लिया या उसने 10-12 बार यूज कर लिया, he will be out of that system. He will no longer be able to access it from any place else. Okay, so there are very many things. You'll have to devise your own practice. But again, you have to have your best practices in place. If you don't do that, you are basically inviting trouble sooner or later. Okay. Now, again, यहाँ पर जो है there is something called PB KDF2. Okay, this is another algorithm. Okay, this is basically, what is this? This is basically encrypting your passwords in a layered fashion. Right now, I have set it to 1, which is not secure. It suggests that you can have it 5,000 layerings. Okay, it will create a blurb first time, then it will take that end result and again create another blurb for that, and then it will do that multiple iterations to the tune of 5,000 times. Okay, now if your system is slow, or if your device on which where you are going to use it, it is slow, then this can create problems. For general desktops, it is fantastic. Okay, so that means the final blurb which I was telling you about would be encrypted 5,000 times, and it will be so fast. For example, just to give an idea, if you're using Wi-Fi, there's something called WPA, okay, encryption system.
Now, when you are putting in your password and you are sharing the password, it is actually encrypting that thing 4,000 times, 4,096 times. Okay? So, smaller devices generally are sometimes slow while you are logging into the system, but your system, when you are working, it happens just like this. You don't even understand that it is happening 4,096 times. Okay? So, with powerful systems, this is not a problem. Okay? But then again, for WPA is one of the easier algorithms to crack. Let me just tell you that. Okay? In this case, this is not possible. You can experiment. अगर आपको लगता है 5 मिनट में आपको लग रहा है आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप 10 मिनट कर दो, 15 कर सकते हो. Other thing is that if you shift your system from network, like say अभी मैंने पहले घर में अपना ब्रॉडबैंड से लॉगिन करा हुआ था, यहाँ मैंने फोन कनेक्ट कर दिया, it automatically logged me off. Okay? If you change your location from this location to this location, if I come to your office and try to log in with this, it will automatically log me off. Yes. So basic functionality is there, but yes, again, we don't have to act stupid and get hurt because of that. Okay? We have to have best practices in place. Any questions? Palta, your question is answered? Okay. I have also explained you about sharing the password, how you can share your password with your employees or friends securely. I am going to show you a couple of more things over here. Yeah. You have to go to Vault, then this is the share icon. Okay. The middle icon. Okay. Now you have to click over it, put in the email address. You can just do that. आपके पास एक से ज़्यादा email addresses हो, आप एक बारी करके देख लो उसमें क्या impact आ रहा है उसके अंदर. I was telling you about bookmarklets. This is how bookmarklets things work. Now, this is the icon over here. It appears as an icon over here. In the background, there is some JavaScript working over there. Now, this thing is going to be created. There would be 3 icons that will be created in your devices, mobile devices. Okay. Whenever you have to enter into login, use your mobile device. Okay. It will ask you to enter this thing. आप जिस साइट के ऊपर गए हो उसमें आप लॉगिन इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो लॉगिन वाला सारा ऑटो लॉगिन वाला फंक्शनैलिटी उसमें आ जाएगी. अगर आप फिल वाली करोगे तो ऑटो फिल वाली आ जाएगी. फॉर्म्स फिलिंग वाली करोगे तो फॉर्म्स फिल हो जाएगा. आपके डिवाइस के ऊपर होगा. दिस इज गोइंग टू बी फॉर मोबाइल डिवाइसेस. ओके. It will be working through bookmarklets. Okay, it will be available in bookmarks, and then ये 3 आपको icons वहाँ पे दिख जाएंगे उसके अंदर. If you are onto any device, you can probably try that out. I have installed it on my Android yesterday for a 14-day trial. I can show you if anybody is interested how to work it on Androids. Okay. Now, I think this basic demonstration is over. All these things have been covered. I'm again asking for any questions, or I can proceed. Sure. Now, I have also shown you one-time, explained you about one-time passwords, but this is how you are going to create them. One-time passwords. Okay. Now, there is a separate panel for creating and managing your one-time passwords. Okay. Now it is asking me to create new passwords, add a new one-time password. With one click, it will generate one new password. Okay. It is an alternative to your master password. Yes. Or if you are trying to open it in a hostile environment like a cyber cafe or something, then this is going to be your thing. Or another instance is that I just explained about WPA security system. Okay, if you are in a hostile environment कि आपने open वहाँ पर access है, कोई user ने password नहीं है, आपने Wi-Fi connect करा हुआ है, that is one of the most hostile situation कि आप तो अपना normal use कर रहे हो, but some hacker or some yes on that network can happen and can steal your information or install your spyware or something can happen. Okay, so in case you are using a public network, okay, it is highly recommended. If you do not trust that network, okay, use a one-time password. Okay. Yes. आपको इसको प्रिंट करना है और अपने जेब के अंदर रखना है
या कॉपी करके मोबाइल के अंदर रख लो, इसके अंदर या कहीं पर ऐसी जगह पे रख लो विच इज ओनली पर्सनल टू यू. ओके, यस. You can. The idea is that कीबोर्ड लॉगिंग की हम बात कर रहे हैं, की लॉगर्स की हम बात कर रहे हैं. ओके, या हम बात कर रहे हैं कि मैंने किसी पर्सनल सिस्टम के अंदर अपने फ्रेंड के घर गया या उसके सिस्टम पे गया, वहां पर जो है उसमें मैंने टाइप करा, कीवर्ड लॉगर लगा हुआ है, या उसने क्रोम के अंदर आ गया, डू यू वांट टू सेव द पासवर्ड, ओके, और मैंने सेव कर दिया, या कोई भी चीज हो सकती है. सो इन दैट केस यू वुड नॉट लाइक टू यूज योर मास्टर पासवर्ड फ्रॉम दैट लोकेशन. Okay, in that case we suggest that you use your one time password. Yes. Hang on, आप जो है ना नए लेने के लिए यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, उसके अंदर आप जो है 10 अपने पासवर्ड जनरेट करके रख लो, सो दैट इन केस यू गेट स्टक इनटू एन हॉस्टाइल सिचुएशन, आपने वो 10 अटेम्प्ट्स आपको कर सकते हो, 20 कर लो, 25 कर लो. राइट लेग के ऊपर, राइट साइड के ऊपर है आपका वन टाइम पासवर्ड. बट दैट इज समटाइम्स नॉट वन टाइम पासवर्ड. यू कैन चेंज इट. यस, 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 यू कैन. मेरी वाइफ जो डेबिट कार्ड है उसने आज तक पासवर्ड ही चेंज नहीं करा, वो स्लिप के ऊपर कहते स्लिप देख के बताना क्या लिखा हुआ है. It requests you to change it that way. Okay. So this thing is clear. Now somebody asked me that how do I bring in all the passwords from other locations? Now this is the import wizard. There are so many things that you can do. Wi-Fi passwords, one password, Clipper, e-wallet, freeform, KeePass, XYZ, आप सारे के सारे यहाँ से आप ले सकते हो. इंपोर्ट के अंदर लेफ्ट के अंदर जो है आपका इंपोर्ट फीचर है. सॉरी, लेफ्ट के नहीं, राइट के अंदर जो है इंपोर्ट है. एंड देन लेट अस से at some point of time you decide that okay, LastPass is not for me, no problems, you can export all your data from this point by clicking on export and download all the data like a CSV. Now again, all data in CSV is dangerous. Whatever you are doing, you have, CSV is comma separated version, Excel का जो टाइप का जैसे फाइल होता है. ओके, नाउ इसके अंदर जो भी आप कर रहे हैं, यू हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज सारे पासवर्ड्स आपके अब वो अनसिक्योर वे में आपके सिस्टम में स्टोर हो रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल इफ यू आर डूइंग इट. सारी एक्सपेरिमेंटेशन मेरे भी करोगे क्या? ओके, इट विल आस्क यू फॉर द पासवर्ड एंड देन बाय क्लिकिंग ऑन लॉग इन इट विल गिव यू ए CSV फाइल डाउनलोडेड. ओके, Planning to upgrade to a different laptop. In it that will work. case, Work. And if that laptop does not have LastPass, Install LastPass and you are ready to go. 2 minutes worth of but thing. will this laptop lose all its data, which is If you are no longer logging in from there, it is no longer accessible. LastPass तो यहाँ पर रहेगा. जब तक आप LastPass पे अपना मास्टर पासवर्ड डाल के उसको एक्टिवेट नहीं करोगे, तब तक वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी ना. so suppose I give this laptop to somebody else is using it. In that case, I may uninstall it LastPass. That's a bad practice. If you have to give away your laptop to somebody, always either remove the hard drive or reformat. Yes. That's personal. आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में हो क्या? क्रोम में नहीं, मेरे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. मैंने तो अभी आपको दिखाया ही है सारा डेमो. इट्स जस्ट रिकमेंडिंग यू डोंट यूज दैट. नहीं, फायरफॉक्स भी फ्री है. मेरे को लग रहा है वो चुन चुन के दिखा रहा है ये चीजें. इट्स नॉट शोइंग इट टू एनीवन. इट्स बेसिकली दैट ओवरव्यू आपको सारा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं.
But that's the manual way of doing it. But best is that you tell it that सारा Chrome का ले लो. जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे इसमें पूछेगा कौन से में से लेना. Then तो ठीक है, फिर आपको जो है वैसे कर लो, या आप इसके अंदर जो है I think there is an option for Excel file or CSV import also. Let me just see. See, generic CSV file. आपके पास Excel फाइल होगी, आप कहाँ पे पासवर्ड स्टोर करते हो? देन तो फिर वो फिर आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा. आप एक एक्सेल फाइल बना लो, ठीक है? एक्सेल फाइल डिलीट कर देना उसके बाद. नहीं, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे लाने के लिए तो कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा ना. चाहे आप एक बारी में 50 पासवर्ड करो या एक एक करके 50 बारी करो, दिस सेम प्रोसेस. सो यू हैव टू कंसोलिडेट हियर, अदरवाइज नो यूज. Import it here and then delete the Excel file. First of all, remove the data from the Excel file, save it, and then delete the Excel file. That's one layer of extra addition of security. हाँ जी. Yes. तो उसके अंदर आपके 3 कॉलम्स होंगे, एक URL, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड. That's about it. नहीं, शिफ्ट डिलीट करने के बाद जो है फाइल्स आप रिकवर कर सकते हो. देयर आर स्पेसिफिक यूटिलिटीज पेड एंड फ्री. What do you call that? वो आप पेपर डालते हो उसके छोटे छोटे वो पीसेस बन जाते हैं. What do you call? श्रेडर. हाँ, oh yeah, that's the name of the utility. हार्ड ड्राइव श्रेडर. फ्री भी आती है, पेड भी आती है. विंडोज 7 के अंदर बाय डिफॉल्ट भी एक ऐसा सिस्टम है, आप उसको कम्प्लीटली वो कर सकते हो. ओके, वो तो हार्ड ड्राइव रिकवरी का है, बट आई थिंक लेट अस. अच्छा, ओके. Okay, but that is not the topic here, so we can discuss it offline. Okay. Okay. Now I think I have shown you one-time passwords. Is this clear? Now I'm going to show you a brief demonstration on grid-based password protection. Okay. लास्ट पास लॉग ऑफ हो जाएगा. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि जब आप ब्राउजर फायर करते हो तो आप अगले 10 से 15 मिनट में जहां लॉग इन करना होता है कर चुके होते हो, बिकॉज दैट इज द पर्पज ऑफ लॉग इन टू द ब्राउजर, स्टार्टिंग द ब्राउजर. आइडल या यूज हुआ है वो कुछ नहीं है, 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा वो बस. हाँ. नाउ दिस इज कॉल्ड ग्रिड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट ग्रिड इज ऑल अबाउट. सेटिंग्स के अंदर आइए. Go to settings. You have to be on the vault. If you are on some other tab, then it will not show you. You have to be on the vault tab. Then go to settings and then go to security, the second tab. Now you get this. Now instead of master password, it will ask you what is in A1, what is in C3, what is in 797, Z7. Okay. Now A1 is this, C3 is this, and Z7 is this. Okay. Now it will ask you these combinations. Now again what you have to do is you have to print it out and put it into your wallet. Okay. Now if somebody has this, then again you have to be very sure that this doesn't go away anywhere. Now every time it is going to ask you a different combination. Yes.
Every time it is going to ask you a different combination. As a result of which, even if you are in some hostile location, even if some keyboard logging is done, even if something else is happening and you have to hand it over to your friend, मजा आया? यहां पर आप गए सेटिंग्स के अंदर, go to security. Now you have to turn it on by clicking this box. Okay. Now unless you have printed it out, it will not let you activate it. Grid multi-factor authentication. Now I think most of your queries would be getting sorted out by seeing this fact. What if this happens? What if that happens? So it is again a one-time password, but with a different level of control. Okay. Now it will always be asking you this thing. Now you come back and you think that somebody asked me while I was doing it for a client of mine, I was giving this demonstration. If there are keyboard loggers and I am logging from the same system every time. Now A1 के ऊपर मैंने ये डाल दिया, C3 के ऊपर ये डाल दिया, Z7 के ऊपर वो डाल दिया, and I do it enough times and it is able to decode my entire matrix. What do you do? Okay. So it is again a one-click solution. Reset your grid, print out another grid. वो आपसे पूछेगा A9 की क्या वैल्यू है, C3 की क्या वैल्यू है, Z4 की क्या वैल्यू है, B5 की क्या वैल्यू है. Gmail where I'm logging from my company account and my personal account both. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इसमें ऑटोफिल कर देता है. मैंने ऑलरेडी एक बार ऐड कर रखा है सेल्स वाला, दैट इज इन्फो एंड देयर इज उसमें ऑटोफिल को जाके हटा दो, वहां से ऑटो लॉगिन को हटा दो जाके. ये तो रैंडम है. हाँ, क्योंकि अब मैं रिसेट कर सकता हूँ यहाँ पे ग्रिड को. आई कैन डिस्कार्ड दिस ग्रिड. आई हैव यूज्ड इट लेट्स से n number of times, or maybe I use it for n number of months. I can reset the grid, I can print out a new grid, and I can start using it all over again. Beauty? Sounds good? जब आप लॉग इन करोगे तब. अभी आपने एक्टिवेट नहीं करा हो ना. एक्टिवेट करने का तरीका मैंने आपको बताया. जब तक आप प्रिंट आउट नहीं निकालोगे एक्टिवेट नहीं करने देगा, क्योंकि आपको मालूम है आपने प्रिंट आउट नहीं किया है, अपने पैड पे कुल्हाड़ी मार रहा है. रहने दो भैया. अगेन अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके साथ हो सकती है नहीं, अगर आपको लगता है कि सारी दुनिया के लोग आप ही को टारगेट कर रहे हैं, फिर आप जो है ना फिर बहुत सारी चीजें निकाल लो. 10 पेन ड्राइव्स निकाल लो, 10 वन टाइम पासवर्ड निकाल लो, एक ग्रिड निकाल लो. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो है पेन ड्राइव्स बना लो यूएसबी की, आप जो है वन टाइम पासवर्ड बना लो, आप ग्रिड बना लो, सब कुछ कर लो. आप ट्राई करो. ये सारी चीजें आप मेरे से पूछो ना, आप कॉम्बिनेशन ट्राई करो आप, क्योंकि अल्टीमेटली मैं बता भी दूंगा ना, तब भी घर जाके आपको वही पूछना पड़ेगा दोबारा से. आई कैन अंडरस्टैंड. आप ये सारी चीजें ट्राई करके देखो, कहीं पे अटकते हो देन आस्क मी, बिकॉज अगर आप अभी ऐसे पूछोगे घर जाके करोगे फिर आपको दोबारा ही पूछना पड़ेगा. उसका एक लास्ट पास का जिस ईमेल एड्रेस को यूज करके उसने लास्ट पास का लॉगिन बनाया हुआ है, आप उसी ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे उसको ऑटोमेटिकली एक आ जाएगा, देयर इज अ न्यू पासवर्ड सेंड बाय मयंक और व्हाटएवर लैंग्वेजेस, डू यू एक्सेप्ट इट. क्लिक करोगे, आपके उसके लास्ट पास अकाउंट में आपका पासवर्ड
अपीयर होना शुरू हो जाएगा, हिडन मोड में या विजिबल मोड में, डिपेंडिंग ऑन कि आपने शेयर उससे करा, हिडन शेयर करा या विजिबल शेयर करा। हाँ, तो आप उसके अंदर जाके उसका ईमेल एड्रेस डिसेबल कर दो, वहां से उसके पास से हट जाएगा। जब आप इनेबल कर लोगे तो उसके बाद डिसेबल की ऑप्शन आएगी। शेयर के लिए कहाँ जाना होगा आपने बोला था, वॉल्ट वाले उसमें शेयर मिडिल वाला आइकन जो है ना, इसमें आउटसाइड एरो बना हुआ है रेक्टेंगल के अंदर, वॉल्ट वाले पासवर्ड के सामने जो है, मैनेज शेयर फोल्डर, नहीं, दैट इज फॉर एंटरप्राइज एडिशन, ये आइकन। ये वाला है। हाँ, ओके, डज इट आंसर योर क्वेरी? Then there is another level of thing specifically for you कि अगर आपके वो सब भी फेल हो जाते हैं, फिर आपकी फिंगर कोई नहीं चला सकता। There is a thing called fingerprinting solution also. इसके अंदर आपके आजकल लैपटॉप्स आ रहे हैं, इसमें आप फिंगर रब करते हो, फिंगरप्रिंट के बेसिस के ऊपर हो जाता है। It can actually associate your password with the impression of your fingerprint also. Probably it is free. You have to check it out. I have never used it. बिकॉज मेरे लैप पास वो सिस्टम नहीं है। नहीं, आप इसके अंदर जाओ ना, उसके अंदर आप एक्सेस करो उसको, वॉल्ट के अंदर। हाँ, उसके अंदर आप जाके उसमें आप सेटिंग्स के अंदर जाओ। श्योर, नो प्रॉब्लम। सिक्योरिटी में ग्रिड के साथ में है इसमें फिंगरप्रिंट और कार्ड रीडर ऑथेंटिकेशन। जहां पे ग्रिड का मैंने आपको बताया ना, ग्रिड के जस्ट नीचे है फिंगरप्रिंटिंग एंड कार्ड रीडर ऑथेंटिकेशन। यस, पूरे मजा ले रहे हैं यार वो लेने दो तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। नहीं, नो सपोर्ट ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, इसलिए मेरे में चेक नहीं हो रहा। आपके में भी कुछ वार्निंग आ रही होगी रेड कलर में। हाँ, तो कर लो, फिर आपका हो जाएगा। ओके, मेरे में नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए वो ग्रेड आउट आ रहा है। ओके, हाँ बिल्कुल, आप ये सारी एक्सप्लोर करोगे आपका। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि किसी भी साइट के ऊपर जाके आपको पासवर्ड डालना हो, या आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि अब आप कहते हो कि आपके पास जो है 50 साइट्स है जिसमें आप लॉग इन करते हो। अब प्रॉब्लम हमारे को ये है कि हमारे को 50 पासवर्ड्स वो कॉम्प्लेक्स वाले याद करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप ये सेटिंग कर दो कि आप किसी भी साइट पे जाओ, ये आपसे मास्टर पासवर्ड मांगे, एक पासवर्ड तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हर जगह का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि जब भी आप किसी भी साइट पे जाते हो, आपको अपना मास्टर पासवर्ड डालना है, वो उसका स्पेसिफिक पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा वहां पर। इसके अंदर है यहाँ पर लॉग इन टू ए साइट के अंदर। सो एवरी टाइम यू आर ट्राइंग टू लॉग इन टू ए साइट, इट इज गोइंग टू आस्क योर मास्टर पासवर्ड। That's it. उस टाइम पे आपसे पूछेगा कि तुम जीमेल के कौन से अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हो, उसमें सेलेक्ट करके बता दो ये है, लॉगिन हो गया, वहां से वो हट जाएगा। यस, मल्टीपल यूजर को हर एक को एक आपको लास्ट पास डाउनलोड करवा के उनका लॉगिन, नहीं वो तो फिर एक आपको मास्टर पासवर्ड हर एक के साथ शेयर करना पड़ेगा ना। समझा नहीं आपकी बात। 10 यूजर्स नहीं होंगे, वो आपके 10 अकाउंट्स होंगे ना बॉस। तो 10 यूजर्स थोड़ी होंगे, आपके 10 अकाउंट्स हुए ना वो। हाँ, तो 10 यूजर्स नहीं है ना वो। तो अगर 10 यूजर्स होंगे तो हर एक को अपना अपना लास्ट पास यूज करना पड़ेगा ना। या Good question. I forgot to cover that. The moment you change your password and log in into the system, it will detect that you have changed your password. Do you want me to update my database? It will do that instantly. Yes. नहीं, फिर आप ऐसा नहीं करेंगे। आप किसी और के सिस्टम पे जाके अपना पासवर्ड क्यों चेंज करना चाहेंगे? आई कैन नॉट थिंक ऑफ ए सिचुएशन। हाँ, अगर आपके पास लास्ट पास है ही नहीं तो आप वहां पे पासवर्ड ही याद नहीं होगा। नहीं, अगर आपको याद है तो फिर आप लास्ट पास को इसका मतलब यूज नहीं कर रहे हो, मजे ले रहे हो आप। इसके अंदर आप जो है
सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने के लिए प्रेफरेंसेस हैं कि आप इसको जो है किसी और ईमेल अकाउंट के ऊपर मंगवाना चाहो तो वहां मंगवा सकते हो। नहीं, इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट्स एन ऑप्शन। मैसेज आ जाएगा कि हाँ भाई ये आपको करा है चेंज, आपने करा तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। I think I am almost done. UB key is I have already explained to you. Okay, this is where you can actually insert your USB drive and install your master pass over there. And whenever you have to log into a system, you'll have to insert that USB drive, without which you will not be able to access that. So if you have that kind of a system कि आपका जो है एम्प्लॉय सिर्फ उसी सिस्टम से ही लॉग इन करे, तो आप जो है पेन ड्राइव उसको दे दो, वो पेन ड्राइव लॉग इन वहां पर नहीं डली होगी तो वो नहीं चलेगा। वो जहां पर पेन ड्राइव आप लगाओगे वहां पर वो लास्ट पास एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोवाइडेड। हाँ, इट इज बेसिकली रिप्लेसिंग यू टू हैविंग टू फिल इन दैट। तो आपकी पेन ड्राइव जो है फिजिकल थी, इसको आप उठा के ले जा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो बाहर ले जाना ना। उसने पासवर्ड याद कर लिया, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते ना। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। इसके अंदर जो है मैंने ये चीज ट्राई नहीं करी है, बट आई बिलीव दिस कैन बी डन थ्रू ट्रस्टेड कंप्यूटर्स, दैट ये खाली इसी सिस्टम से लॉगिन हो और किसी सिस्टम से लॉगिन ना हो। इट इज बेसिकली अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। वो हैश जो आपको खरीदना पड़ता है अलग से, वो 2500-3000 रुपए के आसपास होता है, या आई थिंक 1000-1200 से स्टार्ट होता है। इसके अंदर आप यूएसबी ड्राइव डालो और उसके अंदर आपका काम हो जाएगा। एनी यूएसबी ड्राइव कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस drive can be converted into a UB key system. That can be prevented. अगर उसने पासवर्ड याद कर लिया उसको तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते ना। आप ये तो चेक कर सकते हो उसको, आप वो करके कि पेन ड्राइव तो नहीं उठा के ले जा रहा बाहर, ये वो आपको फिर चेक करना पड़ेगा। अगर सब कुछ आपके साथ हो सकता है तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप जो है पेन ड्राइव को सिस्टम के साथ लॉक कर दो यार। पेन ड्राइव के साथ लॉकिंग सिस्टम्स आते हैं, वैसे कर दो। उसके अंदर ये कर सकते हो आप, उसके अंदर जो 2-3 पासवर्ड उसके अंदर यूज होने हैं, ठीक है, आप उसको दो, और मास्टर पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली रिमेंबर कर दो उसके अंदर, ताकि उसको मास्टर पासवर्ड भी ना पता हो। मैंने ये किया तो ये कह रहा है पेस्ट, ये जो आ रहा है ये क्या है? ये आपका ब्राउजर स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है, राइट क्लिक करना, इसमें राइट क्लिक तो होता ही नहीं है ना। आईपैड में राइट क्लिक कहाँ होता है? आईपैड में राइट क्लिक कहाँ से आएगा वो? बटन ही नहीं होता आईपैड में तो। आई एम नॉट गेटिंग कि ये ब्राउजर स्पेसिफिक आ रहा है। बट अब मैं इसमें कैसे लाऊं वहां से पासवर्ड? आई मीन हाउ डज नहीं, आपके जो है ना यहाँ पे बुक मार्कलेट्स को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसमें बुक मार्कलेट्स, इसमें बुक मार्क्स वगैरह के अंदर जाकर के, इसमें हाँ इसके अंदर आएगा एक्टिवेट बुक मार्कलेट्स। ये कहाँ पे आएगा? मेरे को इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, बिकॉज़ आई रियली डोंट नो द इंटरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। कहीं पे इसमें बुक मार्कलेट्स लिखा होगा, आप उसको एक्टिवेट करोगे ना तो यहाँ पर जैसे आइकॉन्स आ रहे हैं ना, वैसे वहाँ पर एक आइकॉन आ जाएगा। इसमें आता है यहाँ नहीं आएगा, बीच में कहीं पे आएगा, पीछे कहीं पे आता है। See, you will have to devise your own process. You will have to devise your own process. You can have a multiple systems layered onto each other. कि आपने USB भी कर लिया, master password भी कर लिया, grid भी कर लिया. But if the process is not defined and if you're using a weak password or there is something else happening which I cannot explain what, you will still be compromised. Okay, with this I am almost through with this demonstration. If there are any questions, most welcome. Hanji?
करेक्ट। तो आई थिंक दैट आंसर योर क्वेश्चन कि वो कहीं और जाके यूज नहीं कर सकता उसको। वैसे मेरे को लग रहा है कि हम जो सोच रहे हैं मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज आर हाइपोथेटिकल। यू विल नेवर एनकाउंटर इन योर लाइफ टाइम दोज काइंड ऑफ सिनेरियोज इफ यू डू द बेसिक्स राइट। हाँ, सो इफ यू डू द बेसिक्स राइट, आपको पेन ड्राइव वेन ड्राइव और वो सब चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़नी। ऑल यू हैव टू डू इज कि अगर एक अकाउंटेंट है, उसके 3 पासवर्ड उसको देने हैं आपने, अब उसका एक लॉगिन क्रिएट करो, उसमें 3 वो पासवर्ड डाल दो, दैट्स अबाउट इट। उसको पासवर्ड यूज करने की पूरी आजादी होगी, मगर उसको ये नहीं पता होगा पासवर्ड्स क्या है। ओके, उस पर्टिकुलर यूजर का जो है आप जो है उसमें ऑटो लॉगिन लगा दो, मास्टर पासवर्ड। ना उसको मास्टर पासवर्ड पता होगा, ना उसको इंटरनल पासवर्ड पता होंगे उस सिस्टम के अंदर। डू यू गेट दैट? उसके सिस्टम पे आपने मास्टर पासवर्ड डाल दिया, उसके लॉगिन का, अपना नहीं डालोगे ना आप, उसके लॉगिन का जिसमें आपने 3 पासवर्ड या 5 पासवर्ड आपने शेयर करे हुए हैं, उसके अंदर आपने मास्टर पासवर्ड भी ऑटो लॉगिन डाल दिया। हाँ, सो आप एक बारी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करो, आई थिंक बेसिक्स के अंदर आपका काम हो जाएगा। आप जितना उसमें लेयर्स ऐड करने की कोशिश करोगे, कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए इंक्रीज हो जाएगी, आपका टाइम खर्चा जो है दोनों बढ़ जाएंगे इंप्लीमेंट करने से पहले। यस ऑफ कोर्स। आपकी साइट है, फॉर एग्जांपल आपकी साइट से रिलेटेड कम से कम 3 से 5 पासवर्ड्स होंगे। एक आपका जो है होस्टिंग का पासवर्ड होएगा, एक आपका cPanel का पासवर्ड होएगा, हाँ हाँ, मेल सर्वर का होता है अलग से। उसके बाद आपके उसके एक सर्वर के ऊपर आपके कई एक से ज्यादा ईमेल एड्रेसेस होते हैं। फिर आपका साइट का लॉगिन पासवर्ड होता है। तो एक एक साइट के ऊपर, एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर आपके मल्टीपल होते हैं। एंड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, प्लीज। हाँ, लास्ट पास लॉगिन जो है ना, जब आप इसको यूज करोगे तो वो ऑटो लॉगिन का काम करेगा। नहीं, ये तो अभी आपको बता रहा है, दिस इज बेसिकली इन्फॉर्मेशन दैट यू विल बी यूजिंग। इसके अंदर जो है ना, आपका यहाँ पर एक वो आइकॉन आएगा, जिसको यूज करोगे आप तो वो आ जाएगा। एक सेकंड, ये आप ब्राउजर के अंदर है या ऐप के अंदर है? ऐप के अंदर। अच्छा, आप ब्राउजर में जाओ। वो 3 इसमें आप देखोगे, उसमें 3 चीजें हैं। अदरवाइज उसमें कस्टम फील्ड्स डिफाइन कर सकते हो आप उसमें। आप उसमें 3 कस्टम चीजें डिफाइन कर सकते हो कस्टम फील्ड्स के अंदर में, यूजिंग विच जब वो फील्ड डिटेक्ट करेगा उसके अंदर, वहां पर वो चीज अप्लाई कर देगा। देयर आर सेवरल, बट व्हाई ऑनलाइन इज द क्वेश्चन। आपका डेटा कितना है? I think we can stop the recording. Thank you. Thank you.